It says the meeting is now live streamed. Good evening everybody, welcome. सभी का स्वागत है कारवान पर। और बस मैं चेक कर रहा हूँ यूट्यूब पर कि अगर हम सबको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। ओके परफेक्ट, हम सभी को दिखाई और सुनाई दे रहे हैं यूट्यूब पर। सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशान शर्मा और आप देख रहे हैं कारवान द हेरिटेज एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के जाने माने इतिहासकार और विचारक मैं कहूंगा, क्योंकि आजकल जो आज का जमाना इट इज द एज ऑफ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। और इन द एज ऑफ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म we rarely find intellectuals like प्रोफेसर एस इरफान हबीब साहब, जिन्होंने विज्ञान के इतिहास पर, हिस्ट्री ऑफ साइंसेस पर काफी काम किया। काफी लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से वो जुड़े रहे। उसके साथ साथ उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री पर भी अपना योगदान समय समय पर दिया। जैसे कि भगत सिंह पर इनका काम पढ़ने योग्य, जो कि इनके काम से वाकिफ नहीं होंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो कि वाकिफ ना हो। तो भगत सिंह पर जो किताब है प्रोफेसर हबीब की, वो आप जरूर पढ़ें। और हाल में Professor Habib has done something which was a rarity again, because Maulana Azad, in the whole galaxy of nationalist leaders जिनकी हम बात करते हैं, जिनके हम पोस्टर्स देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पोस्टर्स पर हो, चाहे वो बीजेपी के पोस्टर पे हो, मौलाना आजाद एक ऐसा एक शक्ल थी जो कि गायब सी हो गई थी पिछले कुछ सालों में। there was a allegation on the Congress also of removing Azad from their posters, and the contribution that Azad has made in history, in the annals of Indian history, is something that is more relevant than ever before. क्योंकि आज हम एक ऐसे कम्युनल फोर्स से भी लड़ रहे हैं इस देश में, जो कि डिविसिव बातें करते हैं, जो कि हिंदू या मुसलमान का जो भेद है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और इस समय में शायद ऐसे एक लीडर को, एक ऐसे नेता को याद करना जरूरी है, जो कि हमेशा पार्टीशन के बाद हो या पार्टीशन से पहले हो, और जो इस्लाम के बहुत जाने माने नाम रहे एज अ स्कॉलर, उनकी बात करें। तो आज वो बात करने के लिए हमारे साथ हैं द ऑथर ऑफ मौलाना आजाद लाइफ, प्रोफेसर एस इरफान हबीब। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। थैंक यू ईशान। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर हबीब इज, जैसे मैंने बोला कि आज का जो हम देश देख रहे हैं, इसमें बहुत ही डिविसिव बातें बड़ी कॉमन हो गई हैं। आप न्यूज चैनल खोलें तो उसमें हमेशा सिर्फ हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान की ही बातें होती हैं। ना ही एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ना ही शिक्षा की बात होती है, ना ही हेल्थ केयर की बात होती है। In times like these, how do you see the relevancy of somebody like Maulana Azad, who was born in the previous century, who lived about 50 years ago? How do you see this relevancy of this man? एक्चुअली मैं पहले तो एक थोड़ा सा कमेंट हिस्ट्री पर करना चाहूँगा। जो भी तुमने भी कहा अपनी बात में कि इतिहास को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है। मैं इतिहास को समझता हूँ कि ये जो सरकार है, ख़ासतौर से ये पॉलिटिकल पार्टी, ये इतिहास को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। टूल किट की बात तो बार बार करते रहते हैं, इनको ये मालूम नहीं कि ये खुद किस किस तरह के टूल किट इस्तेमाल करते हैं। इतिहास इनके लिए टूल किट है। उसमें फैक्ट्स का कोई वजूद नहीं है, उसमें सच्चाई का कहीं कोई लेना देना नहीं, उसमें झूठ और प्रोपेगेंडा प्राइमरी है और उसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। डिवाइसिव है, वो तो हम सब देखते ही हैं, बड़ा ब्लेटेंटली डिवाइसिव है। उसमें कोई शर्म भी नहीं आजकल रही। पहले तो कुछ लिहाज शर्म होता था, अब वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि अब इतना खुल के सब चीज़ सामने आ गई है कि उसमें कोई चीज़, चाहे आपका खाना हो, पोशाक हो, आपका रहन सहन हो, आपकी शक्ल सूरत हो, आपकी पोशाक हो, सब चीज़ जो है वो कम्युनलाइज्ड है, सब चीज़ डिवाइसिव है, सब चीज़ एक वी एंड दे वाला सिचुएशन है। वो लोग जो हम जैसे नहीं है,
और हम जो उन जैसे नहीं हैं। तो ये एक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में इतिहास का बड़ा बहुत ही कायदे से इस्तेमाल हो रहा है। कायदे से इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत ही यूजफुल है इन लोगों के लिए, क्योंकि वो पोलराइजेशन में एक टूल किट का की तरह काम करता है। इतिहास का कौन सा हिस्सा गायब करना है, कौन सा हिस्सा हाईलाइट करना है, किसको किसको डिमोनाइज करना है, डिमोनाइज करके डिसअपियर करना है। तो उसमें मौलाना आजाद भी शिकार हुए। मुगल ही शिकार नहीं हुए, मौलाना आजाद भी शिकार हुए। तो उसमें औरंगजेब में और मौलाना आजाद में कोई फर्क नहीं है इन लोगों के लिए, है ना। अगर औरंगजेब को बुरा भला कहते हैं, जो एक मध्यकालीन शासक था, उसमें उन उस पीरियड की अपनी बुराइयां अच्छाइयां थी। लेकिन मौलाना आजाद तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बड़े माने जाने माने पिलर हैं। उनके साथ अगर आप ये काम करेंगे कि उनको नाम बाकायदा बेशर्मी के साथ लिस्ट से ही गायब कर दें, हाँ? वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स होती थी, जो आप लोगों ने सुना होगा, उसमें 6-7 प्रोमिनेंट नाम दिए गए थे किताब के अंदर, पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11 की किताब में, एनसीईआरटी की, जिसमें नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, B.R. अम्बेडकर, ये नाम थे। जब रिवाइज किया तो उसमें एक नाम गायब हो गया, बाकी सब वहीं के वहीं है। तो ये इतना इतना शेमलेस है कि आप इसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो मौलाना आजाद तो उसी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं जिस पॉलिटिक्स से वो लड़ते रहे जिंदगी भर। Now, ultimately, he fell victim to communalism. No, this is what he fought all his life. No? तो अल्टीमेटली उनके साथ वही हुआ, वो खुद शिकार हो गए उसी सियासत का, के जो जो जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे जिंदगी भर। तो आज का जो हम जिस जिस माहौल में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि बहुत खतरनाक है। और इसलिए खतरनाक है कि हम अपने अपने जो हमारे आइडियोलॉग्स हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे पिलर्स हैं, उन उन उनके जिंदगी के साथ, उनके कंट्रीब्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हम गायब कर दें। और मौलाना आजाद उसी उसी सोच का हिस्सा है इन लोगों की। जब आप कहते हैं कि एक ही ऑलवेज फॉट विद कम्युनलिज्म, एक जो एलिगेशन मौलाना आजाद पर लगता है कि वो जो एक तमगा है, एक नाम है मौलाना, हम्म। और उसके लिए जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं वो कहते हैं कि वो तो खुद मौलाना थे, वो क्या बताएंगे हमें सेक्युलरिज्म। हाउ डू यू सी सच इलॉजिकल बोगस मतलब एलिगेशन? ये तो इसमें तो कोई गुंजाइश किसी किस्म की है ही नहीं। मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे लीडर हो सकते हैं, उन पर ये सवालिया निशान नहीं लगता, हाँ? न लगना भी नहीं चाहिए, क्यों लगाया जाए भाई। तो ये उतना ही बोगस है जितना मौलाना के खिलाफ ये चार्ज है। तो ये तो मतलब, जब वो पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं तो फिर मौलाना आजाद क्यों नहीं हो सकते। और उससे धर्म का, इन लोगों का धर्म से तो संबंध नहीं है। उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई, राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का, आइडेंटिटी का, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नेशन या राष्ट्र धर्म पर आधारित नहीं होता है। और यही तो एक लड़ाई थी मुस्लिम लीग के खिलाफ। मौलाना आजाद की पूरी जिंदगी इसी बात पर गुजरी। क्योंकि मैं अपनी किताब में भी ये चीज मैंने उठाई है, और मैं ऐसे भी बोलता रहता हूँ कि ये लोग, मौलाना आजाद अकेले नहीं, ये सारे, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो, आजाद हो, बाकी और लीडर हो, गांधी हो, ये सब लोग सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे। ये हिंदू और मुस्लिम कम्युनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ भी लड़ाई थी। तो ये तो 3 pronged लड़ाई थी इन लोगों की। ये दो सांप्रदायिक शक्तियां, हिंदू और मुस्लिम, और अंग्रेज। अंग्रेज थे मुस्लिम लीग के पेट्रन खुलेआम। वो 1905 बंगाल के विभाजन से लेके 1947 तक मुस्लिम लीग के पेट्रन रहे। मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते रहे, खुलेआम सपोर्ट करते रहे, उनके कॉज को सपोर्ट करते रहे। और ये हम लोगों ने देखा पूरे इतिहास में, आप पढ़िए तो आपको मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी
या जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे आजादी के लिए, वो लोग इस बात को समझते थे कि अंग्रेज कम्युनिस्ट फोर्सेस के साथ हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों। मौलाना ने अपने बहुत सारे लेखों में लिखा कि भाई मैं ये तो समझ सकता हूँ कि मुस्लिम लीग का जो कम्युनलिज्म है वो आई कैन एक्सप्लेन कि उन्होंने तो ये सोच रखा है कि अपना धर्म के आधार पर देश बनाना है। ये जो हिंदू कम्युनलिस्ट फोर्सेस हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये अंग्रेजों का सपोर्ट क्यों करते हैं? ये धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता क्यों फैलाते हैं? इनको तो राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। ये तो इनको तो कहीं देश अलग नहीं चाहिए। तो ये इनका बात मुझे समझ, ये मौलाना ने लिखा है कि मुस्लिम लीग की सियासत को तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये जो आर्य समाजी हैं हमारे यहाँ, धर्म के आधार पर हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो शुद्धि की बात करनी शुरू कर दी। भाई तबलीग वाले तबलीग की बात कर रहे हैं, उनकी बात समझ सकते हैं, आप कम्युनल लोग हैं। आप शुद्धि का इशू क्यों उठा रहे हो भाई, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कौन सा मौका है शुद्धि की बात करने का? तो ये मौलाना को उस समय भी इस बात का एहसास था कि कुछ लोग दोनों तरफ से, जो सांप्रदायिक लोग हैं, वो एक जो हमारा मिली जुली संस्कृति और राष्ट्रवाद है, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म है, उसको कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के साथ जुड़े हैं। तो ये मौलाना की बहुत सारी राइटिंग में मिलेगा, जो मैंने अपनी किताब में भी कई बार उठाया। पूरा चैप्टर है इसमें बड़ा सा राष्ट्रवाद पर। तो उसमें कोशिश किया ये बताने की कि भाई ये मौलाना जैसे लोग अपने जीवन भर लड़ते रहे ऐसी शक्तियों से, बावजूद इसके कि वो मौलाना थे, जैसे अभी तुमने कहा। और वो उनकी शुरुआत भी बहुत ही सेक्टेरियन वर्ल्ड व्यू से हुई। ये तो इंटीग्रेटिव पॉलिटिक्स में तो वो बाद में आए। शुरू में तो वो इस्लाम की बात करते थे, इस्लाम के अंदर रिफॉर्म, पैन इस्लामिज्म। बाद में खिलाफत से भी जुड़े रहे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तो एक पीरियड रहा, 3 साल वो एग्जाइल में रहे रांची के पास, जो अंग्रेजों ने। और एक मौलाना के बारे में एक बहुत अहम बात ये है जो आमतौर से लोग नहीं जानते, कि मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं 1920 में। गांधी से मुलाकात उनकी जनवरी 1920 में होती है पहली बार, जब वो 3 साल तक एग्जाइल में रह के, मुराबादी गांव होता था रांची के पास, ट्राइबल विलेज, वहां पर 3 साल तक अंग्रेजों ने उनको भेजा। क्यों भेजा, ये समझने की बात है। अल हिलाल 1912 में निकालना शुरू किया अखबार, और एक फाइब्रेंट जर्नलिस्ट की तरह से उन्होंने काम किया। एंटी इंपीरियलिस्ट उनकी राइटिंग होती थी, बहुत सेडिशियस सेडिशियस अंग्रेजों के हिसाब से, है ना। वो तो नेशनलिस्ट बात थी, लेकिन सेडिशियस राइटिंग होती थी, जो अंग्रेज मानते थे सेडिशियस राइटिंग अगेंस्ट द स्टेट। और उसके बेसिस पर उनके अखबार बंद किया गया, उनकी अखबार की सिक्योरिटी जब्त की गई। दूसरा अखबार निकाला अल बलाग, उसको बंद किया गया। फाइनली ही वाज सेंट टू एग्जाइल, इनटू एग्जाइल फॉर 3 इयर्स। और उसी वक्त अंग्रेजों की जो फाइल है, इंटेलिजेंस की फाइल्स, उसमें मौलाना आजाद को कहा गया कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पर्संस इन इंडिया। अभी देखिए, उस वक्त तक वो आजादी के आंदोलन का हिस्सा भी नहीं है, सिर्फ अपनी राइटिंग्स के बेसिस पर, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, जो चैलेंज उन्होंने प्रेजेंट किया अंग्रेजों के सामने, उसने मजबूर किया अंग्रेजों को ये कहने पर कि ये आदमी सबसे खतरनाक लोगों में है। और इस 3 साल में मौलाना जब रहे, इसमें बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही थी जब वो एग्जाइल में थे। जैसे गांधी केम टू इंडिया एंड ही हैड हिज फर्स्ट मास मूवमेंट, एक तो खेड़ा में, एक चंपारण में। ये मास मूवमेंट हुआ, गांधी की प्रेजेंस का पता चला लोगों को हिंदुस्तान में एज ए मास लीडर। फिर जलियांवाला बाग होता है 1919 में, उस वक्त भी मौलाना एग्जाइल्ड हैं। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है उसी पीरियड में, उस वक्त भी मौलाना एग्जाइल्ड हैं। बाहर आते हैं उस माहौल में जब ये बड़ी महत्वपूर्ण कुछ चीजें हो चुकी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका है, और देश में रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हो चुका है, और एक बड़ा ही मतलब इट वाज
It was an atmosphere, politically very volatile atmosphere, which Maulana found when he came out of prison. And he meets Gandhi, and after that, in the very first meeting, both of them fell for each other. And then they never left each other. They disagreed on so many things, but they agreed on most of the things. तो ये एक शुरुआत है मौलाना की जिंदगी की. अब आप आज कुछ भी कहते रहें, मौलाना कह के उनको रिजेक्ट कर दें या एक मुसलमान समझ के उनको बाहर कर दें, ना पढ़ाएं, तो वो तो हमारी कमजोरी है और हमारा छोटी सोच है. इसमें मौलाना आजाद जैसे लोगों का कहीं कोई नहीं है. वी आर पिग्मीज एक्चुअली. हम तो कहीं कोई स्टेचर ही हमारा नहीं है, लेकिन उन लोगों के सामने मौलाना इज नॉट अलोन. मतलब देयर वर सो मेनी अदर्स जिन पर हम बड़े बड़े सवालिया निशान आज लगाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि हम उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं, क्योंकि उनको छोटा करके ही आप बड़ा बनना चाहते हैं. ये भी एक स्ट्रेटजी है. If you can't rise up to their level, you bring them down to your own level. That is a strategy. So you have mentioned about how Maulana's writings were considered as sedition for the Britishers, or the law has remained the same. The sedition law has remained the same since the colonial times. So I think अगर मौलाना आज जिंदा होते तो शायद आज जेल में होते. हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. So you have said that his early life was because he had no formal education. He had to educate himself, और his was an orthodox family जहाँ पे काफी conservative ख्याल रहे होंगे लोगों के, और he was influenced by all sorts of people from Sayyid Ahmad Khan to Jamaluddin Afghani and all. So how do you see early influences of Azad, and how did he find his secular kind of interpretation of faith later on? How that evolution happened for Azad? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड है. मैंने जो उसका किताब का पहला चैप्टर है, जो फॉर्मेटिव फेज मौलाना का है, उसमें मैंने बहुत सी वो चीजें डालने की कोशिश की जो आमतौर से ऑथर्स ने नहीं मेंशन की हैं या उनको अवॉइड कर दिया. और तो उसमें यही दिखाने की कोशिश किया कि मौलाना की जिंदगी जहां वो पैदा हुए अरब वर्ल्ड में, उनके फैमिली, मौलाना खैरुद्दीन एज ए यंग मैन वो माइग्रेट कर गए थे 1857 की गदर से, क्रांति से 2-3 साल पहले. और वो एक पीरियड था जहां बहुत सारे मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, खासतौर से पढ़े लिखे फैमिली परिवार, अंग्रेजों की आधिपत्य स्थापित होने से पहले वही समझते थे कि मुगल यहाँ से साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो उनकी पेट्रनेज खत्म हो जाएगी, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी. तो काफी फैमिलीज माइग्रेट किया, और वो हिजाज जो है, वो मक्का मदीना, वो एक जगह थी जहाँ पढ़े लिखे लोग मुसलमान चले जाते थे. तो मौलाना की फैमिली भी उन्हीं में से एक फैमिली थी. मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना आजाद के फादर, वहीं जाकर पढ़े, एक बड़े स्कॉलर बने, सूफी स्कॉलर थे, कादिरिया सूफी ऑर्डर से जुड़े थे. कादिरिया सूफी ऑर्डर एक प्यूरिटन सूफी ऑर्डर है, चिश्ती सूफी ऑर्डर की तरह नहीं है. चिश्ती सूफी ऑर्डर में म्यूजिक, डांस, बहुत सी चीजों का स्कोप है, जो हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया वगैरह हैं, ये सब चिश्तियां हैं. कादिरिया ऑर्डर या सुहरावर्दी ऑर्डर ये थोड़े प्यूरिटन होते हैं, जहाँ इन सब चीजों की गुंजाइश नहीं होती. तो मौलाना के फादर जो थे वो थे सूफी, और लेकिन वो बड़े प्यूरिटन थे क्योंकि वो कादिरिया उससे जुड़े थे. वहाबी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा था. ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी पूरा. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने किताब में भी ये कोशिश किया बताने की, क्योंकि इसका असर मौलाना की आगे की जिंदगी पर पड़ा. उस पीरियड में जो मौलाना वहाँ पे पैदा होते हैं, उनकी माँ अरब थी, क्योंकि मौलाना खैरुद्दीन ने एक अरब महिला से शादी की, जो उनके उस्ताद की, कुछ लोगों ने लिखा है भतीजी थी, कुछ लोगों ने लिखा है कि बेटी थी. तो ये एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो उनके परिवार से थी, उनके उस्ताद के परिवार से थी. उसके बाद मौलाना खैरुद्दीन एंटी वहाबी जो फोर्सेस थी उनके साथ जुड़े, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो लड़ रहा था वहाबी हुकूमत, वहाबियों की, जो इब्ने सऊद और अब्दुल वहाब की जो फोर्सेस थी, उन एक आइडियोलॉजिकल
वो था इस्लाम, वहाबी इस्लाम, एक इब्न सऊद की पावर थी जो एक ट्राइबल लीडर था। दोनों मिलके ऑटोमन जो हुकूमत थी उससे लड़ रहे थे, और बड़ी बड़ी लड़ाई उनकी होती रही है। उसके बाद मौलाना के फादर ऑटोमन हुकूमत के साथ जुड़े, और बहुत सारी चीजें वहां भी उसके खिलाफ उन्होंने लिखी, और एंटी वहाबी रहे जिंदगी भर। फाइनली ही कम्स टू इंडिया इन 1895-96। वो आए भी इसलिए कि उनके पैर में कुछ फ्रैक्चर हुआ, और उसके बाद फिर वहां से कलकत्ता आए इलाज के लिए। और कलकत्ता क्योंकि अंग्रेजों का एक गढ़ था, और वहां पर कुछ डॉक्टर्स बेहतर थे, तो यहाँ आकर उन्होंने इलाज कराया। और यहीं पर उनके बहुत सारे मुरीद, क्योंकि वो सूफी थे, बहुत सारे मुरीद पैसे वाले भी बहुत सारे थे कलकत्ता के, जो उनसे अरब में जाके वहां मिला करते थे, हज को जाते थे तो मिलते थे। उन्होंने उनको कन्विंस किया कि वो कलकत्ता आ जाए, माइग्रेट कर लें। कलकत्ता से मौलाना के परिवार का कोई संबंध नहीं था, तो दिल्ली की फैमिली थी। लेकिन मौलाना खैरुद्दीन 1895-96 में वापस आ जाते हैं, कलकत्ता सेटल होते हैं। यहाँ पर मौलाना की उम्र करीब 7-8 साल थी जब आए हैं। एंड देन he watched his father, who was seen as a peer by his followers, जो घर में आके भीड़ लगा करते थे, हाथ चूमते थे, मुंह चूमते थे ना। तो मौलाना को ये सब बड़ा बुरा लगता था, and he didn't like that. What is this Islam? What is this? How can you be so irrational? And so he rejected whatever he inherited, you know, the tradition, Islamic ideas, the worldview which he inherited from his father. He started rejecting it. He got attracted to Sir Sayyid Ahmad Khan's writings. और मौलाना के फादर सर सैयद से नफरत करते थे, उनके ख्यालात से, उनके विचारों से। तो मौलाना चुपचाप चोरी से मटेरियल पढ़ते थे, और पढ़कर अपना सोच बनाते थे। जमालुद्दीन अफगानी की किताबों को पढ़ते थे, उनकी राइटिंग्स को पढ़ते थे। जमालुद्दीन अफगानी और सर सैयद दोनों एक बिल्कुल देवर पोल्स अपार्ट। इस पर मैंने बहुत अलग से भी बहुत कुछ लिखा है अपनी एक पिछली किताब में। और लेकिन मौलाना आजाद के लिए दोनों इंस्पिरेशनल थे, दोनों में उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छाई पाई। सर सैयद से फासला किया मौलाना ने तब जब वो सर सैयद की पॉलिटिक्स से डिसएग्री किया कि आप अंग्रेजों के साथ नहीं रह सकते, आप को लड़ना है तो आपको अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सर सैयद की अपनी एक दूसरी सियासत थी उस वक्त, वो ही वाज मोर ऑफ एजुकेशनिस्ट। तो वो फिर मौलाना ने फासला किया सर सैयद से, और फिर आगे एक दूसरी पॉलिटिक्स शुरू हुई। लेकिन वो इन्फ्लुएंस, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग जो सर सैयद से उन्होंने लिया, वो हमेशा साथ रही। एक क्रिटिकल थिंकिंग कि इस्लाम, उनका जो इस्लाम है उसमें क्रिटिकलिटी बाकी रही। दिमाग को खुला रख के मजहब को समझना, कुरान को पढ़ना, ये मौलाना ने लिखा भी है जगह जगह। तो ये एक जो समझ है वो उनके साथ रही एंड तक। बीच में एक फेज आया कि वो मजहब से ही दूर हो गए, और उन्होंने लिखा, मौलाना ने अपनी बहुत सारी राइटिंग में जगह जगह, कि मैं मजहब से ही दूर नहीं हुआ, बल्कि मैंने बहुत से ऐसे काम किए जो मुझे एज ए मुस्लिम नहीं करने चाहिए थे। मैंने बहुत कुछ किया, और अब बहुत कुछ को उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये कि वो मजहब से दूर रहे। 6-7 साल बाद वो मजहब इस्लाम में लौट के आए, और इस पीरियड में उन्होंने नमाज तक भी नहीं पढ़ी, काफी पीरियड में बीच में, मतलब इतना उनका एक डिस्कम्फर्ट था मजहब के साथ। लेकिन फिर वो समझे, नए सिरे से वापस आए, और जो इस्लाम, जिस इस्लाम के साथ वो वापस आए, वो इस्लाम था जिसमें क्रिटिकल इंक्वायरी की गुंजाइश थी, सवाल पूछने की गुंजाइश थी, जहां एकोमोडेटिव होने की गुंजाइश थी। तो ये उनका जो सेकुलरिज्म की बात जो आप कर रहे थे, वो सेकुलरिज्म उनका इस एक्सरसाइज के थ्रू आया, जब उन्होंने हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू किया। और ये जो एटीट्यूड था मौलाना आजाद का टुवर्ड्स इस्लाम, हाउ डिड इट हेल्प ड्यूरिंग द और बिफोर द पार्टीशन इन काइंड ऑफ जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उनको समझाने के लिए कि आप इधर ही रहें, आप पाकिस्तान ना जाएं। ऑल्सो टू दिस क्वेश्चन,
did you also come across any encounter of Azad and Jinnah? एंड वेर जिन्ना साहब से उन्होंने कभी बोला हो कि ये जो आपकी पॉलिटिक्स है ये गलत है, और ओपनली कभी उन्होंने मुस्लिम लीग को क्रिटिसाइज किया हो फॉर देयर पॉलिटिक्स? नहीं, मुस्लिम लीग को तो ओपनली बहुत जगह क्रिटिसाइज करते थे। वो तो मतलब वो तो मतलब हिज स्पीचेस आर रिप्लीट विद एंटी मुस्लिम लीग सेंटिमेंट। वो भाई 2 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे। 1923 में वो यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, 35 साल की उम्र में। और उसके बाद 1940 में रामगढ़ का कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे, और वो बड़ा क्रूशल फेज था हमारी फ्रीडम मूवमेंट में 1940 से 1946 तक। और उस पीरियड में वो 3-4 साल अहमदनगर फोर्ट जेल में रहे भी, नजरबंद, इन प्रिजन। बात यह है कि ये मैंने अपनी किताब के जो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म वाला चैप्टर है उसमें मैंने ये सब डील करने की कोशिश किया, और बड़ी डिटेल में, कि मौलाना ने मुस्लिम लीग को क्वेश्चन करने के लिए या ये बताने के लिए मुसलमानों को कि आप को मजहब के आधार पर मुल्क ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो आप रसूल का, प्रॉफिट का जो बताया हुआ रास्ता है उस पर नहीं चल रहे। और उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप जाइए 7वीं सेंचुरी में पहली इस्लामिक स्टेट जो पैगंबर मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद साहब ने जो बनाई इस्लामिक स्टेट पहली मदीना में, वो इस्लामिक स्टेट कॉम्पोजिट नेशनलिज्म पर बेस्ड थी, जिसमें यहूदी भी थे, क्योंकि मदीना में यहूदियों की पॉपुलेशन थी। जब हिजरत किया प्रॉफिट ने फ्रॉम मक्का टू मदीना, मदीना में जो यहूदी थे उनके साथ मिलके उन्होंने ही उनको सपोर्ट भी किया, क्योंकि मक्का में उनके जो अपने कबीले के लोग थे, ट्राइब्स के लोग थे, कुरैश और अदर्स, वो सब तो प्रॉफिट के दुश्मन थे। वो तो जान बचा के भागे मक्का से मदीना, और मदीना में इन लोगों ने रिफ्यूज दिया, ज्यूज ने। और अंसार जो उनके, अंसार मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे, जो मक्का से उनके साथ गए, तो जब उन्होंने पहली स्टेट बनाई, वो पहली स्टेट में यहूदी भी शामिल हैं, कुरैश भी शामिल हैं, अंसार भी शामिल हैं। तो मौलाना ने कहा कि जब प्रॉफिट खुद एक पहली इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं जो कॉम्पोजिट है, जिसमें यहूदी भी हैं, जिसमें कुरैश भी हैं, अंसार भी हैं, तो आप आज हिंदू और मुसलमान मिलके एक स्टेट क्यों नहीं बना सकते? आज मुसलमानों को अपना मजहब के नाम पर मुल्क ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये एक उनका एक बड़ा काउंटर था इन लोगों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए। जिन्ना की पॉलिटिक्स ये थी कि जिन्ना ने पूरे 1930s में खास तौर से, क्योंकि 1920s के फेज में तो जिन्ना बीच में निकल गए थे, मायूस हो गए, हिंदुस्तान भी छोड़ गए, लंदन गए, वहां से दोबारा लाया गया, उनको बुला के मुस्लिम लीग लेके आए, क्योंकि वो एक पोटेंशियल लीडर जिन्ना में देखते थे। यहाँ कोई था नहीं, पढ़ा लिखा आदमी था, उसमें तो कोई शक ही नहीं। और he was also one of the most popular leaders of the Congress Party in the early 1910s till early 1920s, and was the senior most leader actually. He was a leader who was a fellow this thing contemporary of Bal Gangadhar Tilak, no? And Tilak belongs to that Gokhale Tilak phase. So anyway, but Jinnah targeted Maulana Azad, and very consciously, and I've highlighted this again and again. He targeted him by calling him a showboy of the Congress, agent of the Hindus. He used abusive language for him, told him that you have no business to talk about on behalf of the Muslims. You have lost all confidence of the Muslim community in this country. You have no business to talk about them. This is the prerogative of the Muslim League, not you and the Congress Party. So he said all this. Maulana Azad never responded directly to Muhammad Ali Jinnah. Not even once. Even when people asked him, even when the press asked him, he said, I want to keep my civility. Let him say whatever he's saying. I don't believe in it. Now,
when you go into history of that period, you will find that Jinnah was trying to do it deliberately. Muslim League was trying to do it deliberately to target Maulana Azad, because they wanted to show that it is only Maulana Azad from among the Muslims who are with the Congress. The rest of the Muslims are with us, which is not true. Now, and I have dealt with this whole issue in detail. If you look at that period, people like Maulana Hussain Ahmad Madni of Darul Uloom Deoband. Darul Uloom Deoband today is known for frivolous fatwas. But in those times, it had some serious reputation. Not that it was not regressive then. Regressive तो उस वक्त भी थे, लेकिन उस वक्त इस तरह के काम नहीं करते थे जो आज होता है. उस वक्त इन लोगों की एक बड़े there were large number of scholars, Islamic scholars with an understanding of India and Islam. उसमें हुसैन अहमद मदनी बड़े इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मौलाना का एंड तक साथ दिया. डिबेट्स की अल्लामा इकबाल के साथ नेशनलिज्म को लेकर. कॉम्पोजिट नेशनलिज्म पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुकलेट लिखी 1938 में अल्लामा इकबाल के इस्लामिक नेशनलिज्म को क्वेश्चन करते हुए. तो ये सब लोग थे. ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, देन अल्लाह बख्श सबरू जो सिंध के लीडर थे, बड़े बड़े पॉपुलर, वो मौलाना आजाद के बड़े सपोर्टर थे, मुस्लिम लीग के मुखालिफ लोग थे. तो ये एक बड़ा तबका था मुसलमानों का जो मौलाना के साथ था. तो इसलिए वो ये तो एक जानबूझ के कॉन्शियसली किया जाता है कि भाई मौलाना आजाद अकेले थे, शो बॉय, which is not true. Which is not true at all. आगे चलने से पहले एक मैं सबके लिए एक रिवीजन मैं करना चाहूंगा कि हमने बात की है अब तक के मौलाना आजाद के अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या रहे. हाउ ही वाज बोर्न इनटू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली. हिज अर्ली थॉट्स वर वेरी कंजर्वेटिव बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड जो भी उनके आसपास चल रहा था. लेकिन ही ग्रू अप फ्रॉम दैट कम्युनल और कंजर्वेटिव रादर approach of Islam to a more inclusive and more open-minded approach, जिसमें उन्होंने कहा every Muslim should be their own interpreter of faith, और कोई मौलाना या किसी religious person की बात पर आप मत आए. आप अपना खुद जो आपका धर्म है आप उसको समझें और उसको माने. Secondly, he stood for a united India, और ये बताना जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि एक रिलीजियस कम्युनिटी या कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज को हमेशा टारगेट किया जाता है और उनसे हमेशा सर्टिफिकेट मांगा जाता है उनके नेशनलिज्म का. तो जो शायद मौलाना आजाद ने उस जमाने में कहा वो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है. और दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि जस्ट आफ्टर पार्टीशन मौलाना आजाद मेक्स अ स्पीच ऑन द स्टेप्स ऑफ जामा मस्जिद, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम आज जल्जलों से डरते हो, पर ये याद रखो कि तुम भी एक समय एक जल्जला थे. So he was always trying to incorporate Muslims at a time when there was so much chaos around among the Muslim community. How do you see that speech of Maulana Azad from Jama Masjid? That speech shows Maulana's desperation. Desperation in the sense that he felt that he has not been able to keep India united, and he was desperate to tell people that what you are doing is wrong. You are actually leaving a country, your home, where you have the graves of your ancestors. Your ancestors came here 1,000 years ago. So it's not that you are new to this country. It is your country. You have been here for 1,000 years. And this is something which he spoke in 1940 Ramgarh Congress session also as president. And he repeated these things till the end. And he said lots of things which were like, I will not say that they were like somebody was using this expression bhavishyavani. I was in a press conference 2 days ago on something else, but somebody asked me this question that Maulana ने 2 भविष्यवाणी की थी. मैंने भाई भविष्यवाणी तो वो कोई भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति नहीं थे. उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उनका, और वो उनकी अपनी फीलिंग थी एज एन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन
and very keen, intellectually aware human being, जिसमें उन्होंने कहा था कि, और मुसलमानों को खास तौर से पार्टीशन के वक्त, जो आज सच साबित हो रहा है कि भाई तुम जहां जा रहे हो वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, हाँ? और जहां तुम जा रहे हो वहां उस मुल्क में तुम खुश नहीं रह सकते हो। और एक दूसरी चीज उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, जिसके बारे में लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि वो पता नहीं सच है कि नहीं है। वो एक जर्नलिस्ट थे, नाम मेरे ध्यान से नहीं निकल गया, हाँ, शौरिश शौरिश कश्मीरी आई थिंक। तो जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो 25 साल से ज्यादा इकट्ठा नहीं रह सकता, वो टूट जाएगा। और वो एग्जैक्टली 71 में 25 साल में हिंदुस्तान, वही बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 मुल्क हो गए। हाँ, तो जो जो बात मौलाना कहते थे कि मजहब जो है वो आपको इकट्ठा नहीं रख सकता है, संस्कृति और जबान 2 चीजें मजहब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीजें जमालुद्दीन अफगानी ने भी कही अपनी राइटिंग्स में, जो जिसका असर मौलाना की अपनी सोच पर भी पड़ा कि कौमें, communities, change religion several times, but they don't change their languages as frequently as religion. तो लैंग्वेज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्युनिटी के लिए। और फिर वही हुआ 71 में कि रिलीजन बिकेम redundant, language and culture became more important. The same religion which forced them to divide this country in the name of Islam became almost like it was forgotten, and language became more important, culture became more important. So मौलाना ने इन्हीं सब बातों को कहा। और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो मौलाना की जो सो कॉल्ड भविष्यवाणी थी, या जो उनकी अपनी सोच थी, उससे बहुत कुछ मेल खाता है। कि आज जो लोग यहाँ से गए, जिनको मौलाना ने वार्न किया कि ना जाओ, वो लोग आज भी मुहाजिर हैं, आज भी मुहाजिर हैं पाकिस्तान में। उनको अपनी पार्टी बनाने की मजबूर होना पड़ा। उनकी पार्टी के लीडर लंदन में रहता है एग्जाइल में, ही कांट इवन कम टू पाकिस्तान, पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान से बाहर है। So many muhajir leaders have been shot dead in Karachi by the so-called Pakistani nationalists, Punjabi and Sindhi. So this is what the muhajirs are facing over there, the people who went from here. तो उन्होंने वो फैसला उस वक्त किया, लेकिन आज वहां पे जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और उसमें मौलाना ने जो कहा काफी हद तक सच है। और आपने उनका जेल के बारे में बोला है, व्हेन ही वाज इन अहमदनगर jail, and that time he wrote a book also, which is या very या important for us या to या discuss, गुबारे खातिर. गुबारे खातिर, यस। So if you would like to talk about that, या which वो is, वो 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 एक बहुत ही अनयूजुअल किताब है। yeah, और yeah, मौलाना की ने दो किताबें लिखी, इंपॉर्टेंट किताबें। एक तो तर्जुमान अल कुरान, जिस पर मैंने एक डिटेल में एक चैप्टर है, इस्लाम से मुताल्लिक़ है। दूसरी है गुबारे खातिर, जो उनका बड़ा सेमिनल वर्क है और आखिरी सीरियस काम है। उसके बाद तो उन्हें वक्त मिला ही नहीं कुछ लिखने का। और ये किताब की तरह नहीं थी, ये तो इट इज बेस्ड ऑन एपिस्टोलरी एसेज। मतलब वो उनके एक बुजुर्ग दोस्त हुआ करते थे, हबीब रहमान खान शेरवानी, अलीगढ़ में। और उनसे वो मौलाना बहुत सारी बातें, सीरियस किस्म की बातें किया करते थे। और शेरवानी साहब को सियासत का कोई शौक नहीं था, he was not very keen to talk about politics. He never talked about politics. He only talked about intellectual affairs, philosophy, and all sorts of things. So Maulana wrote a letter to him, the first letter, and after writing, he was told by the jailer that here you are not allowed to post anything outside. क्योंकि वो जो ये imprisonments होते थे, उनमें अलग अलग रूल्स होते थे। कहीं सिगरेट पीना अलाउड होता था,
कहीं नहीं होता था। मौलाना चेन स्मोकर थे, ये भी उनको बहुत झेलना पड़ता था। कहीं खत लिखे जा सकते थे, कहीं नहीं। कहीं आप किताबें अपने अंदर ले जा सकते थे पढ़ने के लिए, कहीं नहीं। कहीं अखबार मिलते थे, कभी नहीं। तो ये सब ब्रिटिश सरकार रूल्स बदलती रहती थी। तो यहाँ ये कानून था कि आप कोई खत नहीं लिख सकते। मौलाना कहा ठीक है। तो मौलाना ने अब ये आदत बनाई कि वो हर 1 महीने 2 महीने में एक किसी भी आर्बिट्ररी टॉपिक पर जो दिमाग में आता था, चाहे वो फिलोसफी का हो, लाइफ, जिंदगी पर हो, व्हाट इज लाइफ, उस पर में हो, जिंदगी में खुशी का क्या क्या कितनी अहमियत है, टू स्टे हैप्पी, टू रिमेन हैप्पी, नो, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट। तो उस पर उन्होंने लिखा। उस पर बहुत सारे कोट्स उनके हैं। वो फ्रेंच आंद्रे जाइड को कोट करते हैं, चाइनीज स्कॉलर्स को कोट करते हैं, नो। तो आंद्रे जाइड को कहते हैं कि साहब, ही रोट दैट टू स्टे हैप्पी इज योर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, social and moral responsibility, because if you are not happy, then you actually influence others to go morose, to be unhappy in society. So it's your social responsibility also. So he keeps writing these such letters, and so the letters were about 24. And the last letter, then he wrote a long letter. 2-3 of them were very important, which I have highlighted, which are generally people don't know much about them. Is about and second thing, this book actually is a should I say the only book which can be taken seriously regarding his life, because other books are not as authoritative as Huwar Khatir. Because other books I have given in detail, I don't want to talk here, but I have given in detail in the book why other books are not so reliable. But this one is the most reliable one, because this was penned by Maulana Azad himself. And he talks about his early life, his family, and whatever, his education, all sorts of things. Then he writes about his passions in life. Like he writes about tea. Like Maulana was a passionate tea drinker and always used to have uh, Chinese jasmine tea, no other tea. And so for him, making tea at 3:30 in the morning, that's the time he used to get up, 3:34 in the morning. And he has written that I want to get up early because I want to work alone when everybody is sleeping. That is the best time for me. When the world sleeps, I work. So his first cup of tea, which he used to make himself, was at 3:34 in the morning. And he used to light a cigarette. So when he writes the tea making process as a celebration and drinking of tea as a celebration. It's a beautiful, like, Urdu prose is lovely. When I have given translations only, but original Urdu is so poetic when he describes how he drinks tea, because he says, I'm not a ruffian or an uncivilized person who will just gulp it down. No, I take my small sips, and I don't finish my tea till my cigarette is there. So both of them, my cup of tea and my cigarette, they should end simultaneously. So there is a beautiful description about that, and then he gives into the whole detail of tea and how it came to India, what the British brought, the people who drink tea, I don't know what they drink. It's not tea at all. It's something else. It's a concoction of some black leaves which the British brought from China, which they thought it's tea. They planted here in Ceylon in India, and told Indians that these are tea leaves, which is unfortunately untrue. And then they also mixed milk in it and added sugar to it to make it worse. So, so he says, I'm in a position where I can't even invite anybody to have a cup of tea with me, because I don't think that anybody deserves an invitation. Their taste of tea, their liking of tea is so different from mine. So there is a whole interesting description. And then he comes to discuss music, because Maulana was an accomplished sitar player.
he learned sitar as a young boy in Calcutta from somebody called Masita Khan. Masita Khan was a murid of his father, and so he requested him on the court that, and then first he disagreed that my peer will not like it. Finally, Maulana convinced him that I will come to your house, spend 3 hours with you every day, quietly, and you don't have to bother, which he did. So he learned about 3-4 years to play sitar, and he became a proper professional. This thing, he learned it so well, and he has described that how in his visits to Agra, he used to go and sit at the back of the Taj Mahal and near the Yamuna, and play sitar during the moonlit night. So he was so passionate about it, and this love for music. And then this whole chapter is full of his observations about Western music, German music, and German musicians, other French musicians, Indian musicians, position of music in Islam. So he talks about all sorts of things in that last essay. So this is something which has not been dealt with in detail by writers earlier. So people just touched it. I tried to make Maulana speak himself. So I have paraphrased lots of things so that Maulana appears to speak about it himself, about all his lackings and about his choices in life besides politics. So coming to politics now, towards the later part, the final part of Maulana's life, which is as the education minister, first education minister of independent India. शायद अब एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे इस बारे में, लेकिन हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चाहे आज के पॉलिटिशियंस को बात पसंद ना हो, लेकिन he was a accomplished sitar player, as you mentioned, scholar of Islam, और जिन्हें थोड़ा विट ह्यूमर भी पता था, और उर्दू शायरी में भी उनकी दिलचस्पी थी, चाय में उनकी दिलचस्पी थी। शायद अभी के नेताओं को चाय बनाना उनसे सीखना चाहिए। जो अपने चाय वाला बोलते हैं उनके लिए काफी। बिल्कुल। So how do you see that decision of making Maulana Azad as the first education minister influence the education policy of independent India, the foundation of independent India's education policy? You see, in those times, Maulana Azad was almost a natural choice, because he was a scholar who had actually wrote. He himself didn't go to any school or university or this thing, but he was an autodidact, जिन्होंने खुद को पढ़ाया, बहुत कुछ अपने आप को पढ़ाया, अपने जो लाइक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यूरोपियन हो या वेस्ट एशियन हो या जहाँ भी वो गए, जहाँ भी, मतलब उन्होंने अपने आप को, हम जनरली कहा जाता है कि वो मौलाना को अंग्रेजी और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनका कोई खास ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन ये गलत है। मौलाना ने कभी अंग्रेजी खुद बोला नहीं, लिखे भी नहीं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश इतना सीख लिया था कि वो पूरी अंग्रेजी किताबें पढ़ते थे, फ्रेंच सीखा, फ्रेंच बुक्स वो पढ़ते थे, जिसका सबूत उनके जो दोस्त हैं जो जेल में उनके साथ रहे, उन्होंने कई जगह लिखा है कि मौलाना वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इनको वो फ्रेंच में पढ़ते थे। रूसो को फ्रेंच में पढ़ा, अंग्रेजी के जो फिलोसोफर्स हैं उनको अंग्रेजी में, बर्ट्रैंड रसल को अंग्रेजी में पढ़ा। तो वो अंग्रेजी बोलते नहीं थे और लिखते भी नहीं थे, लेकिन पढ़ते सब थे। तो ये एक अच्छा सबक समझते थे सब, वो कभी किसी इंटरप्रेटर की उनको जरूरत नहीं पड़ी, वो सब समझते थे। बोलने में उनको एक वो था कि भाई हिचकिचाहट था, जो भी कुछ था वो कभी बोला नहीं, लेकिन वो सब अच्छा। उसके बाद जब वो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं तो जाहिर है कि
उसके बारे में बहुत सा कहा जाता है कि वो गांधी और नेहरू दोनों चाहते थे बने, कुछ लोग कहते हैं गांधी नहीं चाहते थे मौलाना आजाद बने, लेकिन वो सब में कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन नेहरू की चॉइस तो जाहिर थी कि मौलाना आजाद को वही जिम्मेदार बनाना चाहिए। और वो सिर्फ एजुकेशन के मिनिस्टर नहीं थे, वो मिनिस्टर फॉर साइंस, मिनिस्टर फॉर कल्चर, तीनों मिनिस्ट्री थी। ये तो आज हमारे यहाँ डिवाइड हुआ है, मिनिस्ट्रीज अलग अलग हो गई। उस वक्त तो एक ही आदमी के पास थी। तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में भी जो भी कुछ फाउंडेशन रखा। 1950s का डेकेड को मैं अपने काम में मैंने इसमें भी लिखा किताब में कि भाई इट वाज अ फॉर्मेटिव फाउंडेशनल डेकेड 1950s। जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो, एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, उन सब की बुनियाद फाउंडेशन इसी 50s के डेकेड में रखी गई। इट वाज अ फॉर्मेटिव डेकेड which had a huge influence in the growth and development of future India। क्योंकि अगर वो डेकेड उस डेकेड में काम नहीं हुआ होता, जो आज बड़े बड़ी क्लेम लोग करते हैं कि ये नेहरूवियन डेकेड है, ये डेकेड है मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को। इसलिए मैं नहीं जोड़ रहा हूँ कि वो 2 साल ही रहे, उसके बाद 1950 में वो चले गए। तो ये तो सरदार पटेल का बार बार नाम लिया जाता है, वो तो ही वॉज अ हार्ट पेशेंट एंड ही डिडंट रियली हैव मच टाइम। लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट हमारे लीडर थे उस पीरियड में, चाहे थोड़े समय के लिए रहे हों। लेकिन ये लोग वो थे जिन्होंने बुनियाद रखी हमारे मॉडर्न इंडिया की। एंड मौलाना आजाद का एक रोल, बड़ा अहम रोल उसमें है, एजुकेशन में खास तौर से। अगर आप देखें तो मौलाना को की स्पीचेज आप पढ़िए, जो मैंने इसमें किताब में इस्तेमाल की भी की हैं, कि उनको ये एहसास था that that India is a country which has not seen equity, and he made a distinction very clearly between equality and equity. He said we need equity because we have had an unequal society. So equality in an unequal society means nothing. If the society is unequal, where there is a lag between the two people who are contesting in a race, there you need equity first. Bring them to the same level. So give a section advantage, against the privileged ones who have been privileged for centuries, and those who have not been privileged for years. So you have to bring them at the same level. So for that you have to talk of equity, so that they can contest at the same level. So Maulana very clearly said that we have to talk of equity, where a section which has been deprived over centuries, which includes women, so they should be given priority. They should be supported. Budget was very low. There was no money. Because if you see, budget was hardly anything. And Maulana raised the issue several times, and during his lifetime he tried to bring the budget to 30 lakhs or something, which is nothing, which is peanuts. But this is what he tried to struggle. Then he emphasized on adult education. He said, you cannot, in a democracy, we are a democracy today, where franchise is very important. And these are his speeches of Maulana Azad. When franchise becomes important, when formation of government depends on people's vote, then people, the adults who are voters, should be educated. They should know why they are voting, whom they are voting for. So even for a good functional democracy, adult education is very important. So he was not just concerned about the school and university, he was concerned about those who are outside the system. So he devised so many plans. Some worked, some didn't work, because those times were very different. After partition, there was another big issue of rehabilitating people who have come to India after bitter experiences, facing violence, losses in the family, destruction in the family, financial, social, personal, all sorts of things. And they were all bitter people. Many of them were bitter people who have come with very sad experiences.
So they have to be like you needed a balm to 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 bring them to sanity and rehabilitate them in a new country, the home they have left behind. So these were challenges before Maulana Azad as a Minister of Education, Culture, Science, because these three things were important for anybody, people who were here or people who had come from outside. So then institutions of culture, he knew that the British were not interested in institutionalizing culture. For them, exploitation of this country was more important because it was a colonial project, which was exploitative. You know, they invested only in things which were useful for them to exploit India. They never stayed here. They took everything back to England, which came in handy for industrial revolution, for their own development in 19th century back home. So after 200 years of exploitation, Maulana knew that culture was not very important for them, because their culture, emphasis on culture, was waste of money and waste of time. So nothing was institutionalized. So Maulana had to set up Sahitya Academy, Sangeet Natak Academy, Lalit Kala Academy. They all came up in 1950s, early 1950s, 52, 53, 54. Jawaharlal Nehru was requested by Maulana Azad to become chairperson of Sahitya Academy. And then Maulana mentioned very clearly that I am not requesting him to become president of Sahitya Academy as a prime minister. I am requesting him to become chairman of the Sahitya Academy because he is a man who is a man with ideas, who is a prolific writer, who is a man of literature, who is a man of erudition. He is not simply a politician. So he very clearly pointed out why he has opted for Nehru as a chairperson, first chairperson of Sahitya Academy. So all these institutions comes up, UGC comes up, Radhakrishnan Commission is set up in 1948 itself, which gives the report in 1 year. And then finally, IIT Kharagpur comes up, and other institutions come. CSIR comes up. Though CSIR began, the project of CSIR began, it was a wartime project, for Second World War, 42, 43. But it was formalized later on. Shanti Swarup Bhatnagar was involved as the first Director General. So these things happened. And then Shanti Swarup Bhatnagar was one person who met Maulana Azad as a student on a railway station. Shanti Swarup Bhatnagar has written in his work that I met him on a railway station when Maulana was traveling through Punjab. And then when he later met him as a chemist, Maulana recollected meeting him, and this association fructified very, very, very effectively and constructively for years, because Shanti Swarup Bhatnagar became the first UGC chairman, director of CSIR, and head of so many other institutions, because he was very, very, very successful as an administrator in the beginning. So these are like seminal contributions of Maulana Azad as a minister of these three departments. And there is a very interesting episode, when he, as I said, he was a man who loved music. Soon after independence, Sardar Patel was in charge of Ministry of Information also. So Maulana used to listen to radio, and he found that the classical music programs are very substandard. So something should be done to improve. So he wrote a letter, which I have mentioned in the book also. Wrote a letter to Sardar Patel saying that I am interfering in your ministry's affairs. Sorry for that. But I am forced to write this letter to you because I want to tell you that the Ministry of the All India Radio is not really doing a good job. And whosoever is responsible for it, if you allow me, I can give little time to improve it,
you can send the responsible person to me and I can have a chat with him. Only if you feel that I should interfere. So this is something which is so interesting, and we can see how these people's personal choices and likes and dislikes motivated them to improve things, the institutions which were coming up. Indeed. And this brings me to the conclusion of the session. We have completed an hour of talking with, and Maulana Azad is a person, now that we are discussing, that you can't limit the discussion to 1 hour. There's so much more to So talk much to talk. about Of Azad, course, and of you have course. written it in your book also, which is now available. और ये किताब मौलाना आजाद a life LF book company की तरफ से शाया हुई है, और ये अवेलेबल है बहुत सारे दुकानों पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। हमारा कोलैबोरेशन उर्दू बाजार के साथ है, तो अगर आप लोग 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंजॉय करना चाहते हैं ऑन ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, तो आप लोग द लिंक इज इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन एंड इन द लाइव चैट। use the code car123 to get a 10% discount on already discounted price of 799। ये किताब जरूर मुझे लगता है आज के जमाने में पढ़नी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू वोंट get to learn about Maulana Azad in coming times in the next 4-5 years, I think. लेकिन आप उनके कंट्रीब्यूशन को हटा नहीं सकते. You can erase history from textbook, but you cannot erase history from the memory of people or from the work that they did. And मौलाना आजाद के साथ शायद एक और समस्या ये थी कि his contributions were, maybe it's my personal opinion after this conversation, that his contributions overshadowed by the contributions of likes of Nehru, who also made great contributions, but they kind of overshadowed the contribution made by Azad. और उसके वजह से कई सारे जगहों पर आजाद के बारे में हमें बहुत कम जानने मिला. So this is the right time to read about Maulana Azad, and Professor Habib has done it for us. He has kind of सारे sources को मिलाकर उन्होंने एक त्रिवेणी तैयार करी है हम सबके लिए in a very easily readable format. Or I have a copy of it in Kanpur. I don't have it here. Otherwise, I would have shown the copy to all of you. But आप सभी जरूर इस किताब को पढ़ें, और जो इतिहास के साथ आज हो रहा है, this is nothing new. It started in the 70s, then in the 90s, then now. But the degree of these changes is worrying to us, to Professor Habib, to all other historians in the nation, and we stand against these changes on academic levels. Because these are rewriting of history is a natural process. It should happen definitely. But that rewriting should be left to historians who are trained to interpret the past, not politicians and their whims and fancies. So with that thought, I think thank you so much, Professor Habib, for agreeing to do this. You have been very busy with regular interactions with the press and with other organizations. Thank you so much for taking out time. I hope you enjoyed the conversation. Of course. And thank you so much, everybody, for joining the conversation online. We had some questions. We had one question for you, but I think you have already answered that question. It was on Dr. Bhatnagar's relation with Maulana Sahab. So thank you so much, everybody. We'll be back again with another session. Till then, keep reading. Maulana Azad, A Life by LF Publication, LF Book Company, written by Professor S. Irfan Habib, is now available nationwide in different bookstores and online platforms. So we would support an offline bookshop rather than Amazon. And if you are also against Amazon, as we are, go to Urdu Bazaar's online platform, get your book on a discounted price and enjoy the book. Share your feedbacks with Professor Habib on email and on Twitter. He's very active on social media, and I think that's the way historians must function now in the age of social media, where historians are attacked by trolls for writing histories. So
Thank you so much. Thank you. Thank And you. Thank we'll you, sir. end the stream now. Thank you. Thank you.